Good morning, everyone. Let us begin with the most awaited and exciting Gup Shup session with Mr. Vikas Ranga. Good morning, Vikas sir. Good morning, and good morning, all. Thank you so much. Vikas sir, how are you today? Yeah, I am really good, and I am really grateful also. Thank you so much. Well, Yeah, Vikas sir, yeah, yeah. the pleasure is ours that you found you found time to come for this Gup Shup session. No, it's my pleasure, and it's always so much fun, so much fun to talk to like minded folks, and I am sure that I will be having a great fun. So sir, let us begin with your childhood. Like, what were you as a child, and what was your thought process back then? Okay. So I was born in a small village of Haryana, and so I was in that village until I was 4 or 5, and then we moved to a nearby small city called Bahadurgarh, and I had my schooling from there, and I had my schooling from like state board, and so it was a very small school, and so we were having good fun those days, in the daytime going to school, and in the evening, as we were not having any phones, so we used to go out and so play, and so yeah, so we were playing all sorts of game at that time, be it gilli danda and lattu, and used to play all those games, and it was like great fun time, and when I was maybe 4, when I have started to speak, then I have realized it, hey, I have this stammering, and so I remember there were few folks who used to like bully me, and so there was a nearby shop, when I used to go to that shop to buy, and then if I am stammering, say, if say I am saying ki mujhe chini de do, then he was like ki चीनी तो मेरे पास ये है, and then he used to kind of mimic me, and then I was feeling very bad. I'm like कि मुझे ये वाले शॉप पर ज्यादा नहीं जाना है, but वो शॉप नियर बाय थी, और at my home was saying कि go to that shop and buy, and those were the things as such. And at home, when I was stammering, everyone used to say uh, आंवला खा, उससे ठीक हो जाएगा, या तो do this, then you will be fine. And then due to that, there was some a bit of hate towards stammering during schooling. I was like, यार stammering एक थोड़ी ऐसी चीज है कि जिसमें everyone is saying कि ये तो ठीक नहीं है. And then school में भी like वो वाला चीजें था कि if in the school, if I had to read कुछ, मान लो रीडिंग वाला चीज है, और and it's happening like line by line, हाँ मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा तो फट के हाथ में आने वाला है कि मेरा Right. नंबर आएगा. And तो then this was till class 8th, and
8th के बाद 2 साल जो जो थे ना, उन 2 साल में I got changed. I don't know. I was like, hey, I am very shy kid, and I need to change my way, the way I am dealing with the folks over there. And during that time, I started to watch movies of Shah Rukh Khan also, and like those cool movies where he was having those cool looks going everywhere, cool way में वो होना. Then I was like, I'm liking Shah Rukh Khan. मुझे Shah Rukh Khan के जैसा मतलब personality बनाना है. And तो 8th के बाद दो दो साल जो थे उसमें मैंने अपने आप को चेंज किया था. फिर मैं वैसा बन गया था कि आई यूज टू गो टू लाइक स्टेज आल्सो, एंड आई यूज टू होस्ट शोज. एंड देन आई हैव रियलाइज कि उन 2 साल में आई डोंट नो क्या हुआ था. आई जस्ट वेंट टू स्टेज एंड डूइंग ऑल दोस थिंग, एंड आई वाज हैविंग अ फन टाइम. एंड फिर जैसे ही हाई स्कूल हुआ, फिर हाई स्कूल के बाद इन 11th 12th I got to know about IIT. And जैसे ही I got to know about IIT. And तो स्कूल में everyone was saying कि that's really hard, वहाँ पे होना बहुत ही hard है, you need to work really hard, और हो गया तो life बन जाएगा, and so on so forth. And I was like, now I have to do it. I became like passionate about that. I went to home and then told I will be doing it. Then घर वाले was like कि ये क्या है, and as they were not knowing अबाउट दैट, तो फिर घर वालों को बोला, फिर मैंने स्टार्ट किया. फिर वो 2 साल वैसे थे कि मैं अपने एक सोलो जोन में गया. आई लेफ्ट एवरीथिंग. तो आई हैड सेड टू होम, आई विल नॉट गो टू एनी मैरिज, आई विल नॉट गो एनीवेयर. And but 2 साल I just studied really hard, but I really liked that period. Means I have found my new self where मैं वो cool style वाला चीज मैंने पूरा छोड़ दिया था. And then I was more like a geeky. That was a new side. And then I got a phobia once more to speak. Because those are I was just like studying, and I really liked that my zone where वो वाला चीजें वैसा था कि I used to wake up at 4. देन सुबह 4 से 8 तक मतलब like स्टडी. देन स्कूल में जाना, स्कूल से आया, देन आई एम गोइंग टू माय रूम मतलब स्टडी ओनली. एंड and फिर I used to not to go to school for a few days, वैसे वाले वे में कि स्कूल में जा करके कुछ खास काम होना नहीं है. I'll be at home and I like study only. And but I just loved that time. It was so beautiful time, yeah. So yeah, that had been schooling, something related to stammering, some sports playing, and some going into the deep zone last के 2 साल में. And but it was usually fun times. So then, in short, I guess I can say कि बड़ी बड़ी कहानियों की शुरुआत एक छोटी जगह से ही होती है, right? Yeah, So yeah, yeah, that, yeah, 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 and yeah. So since you said that you worked hard for 2 years, and then you finally got into IIT. So you might be like the like one of the favorite members or the favorite child in your society, in your family, and then in your colony, because everyone uh, like in India, everyone wants their kid, son or daughter to go into IIT. So so after getting into IIT, did you get that strong attention from the society? हाँ हाँ यार. मतलब वो तो बहुत था,
like that's still there now. क्योंकि मैं यदि एक और चीजें बताऊं कि at my home no one has done graduation as well. So apart from me, the only graduation and post graduation done by is my sister. एंड तो फिर मतलब कि घर पे ना एक वैसा सीन था कि इफ एनीबडी विल स्टडी डिसेंटली गेट अ जॉब, तो बहुत है यार, मतलब देवर लाइक कि जॉब भी मिलना बहुत हार्ड है, तो लाइक बहुत है. एंड तो देन विद लाइक फॉर मी इट वाज लाइक कि एंड देन आई वाज गेटिंग मतलब just want to share a few more lines that you yeah. didn't ask as well. तो देन ड्यू टू दैट मेरे साथ क्या होना है कि मेरे को बहुत फ्रीडम मिला उसके बाद, वैसे वाले वे में कि जो जो जॉब लेना ले लो, जो जॉब लाइक छोड़ना छोड़ दो, इफ यू वांट टू डू योर ओन स्टार्टअप do it. As at home, if I am getting a decent monthly salary, they're like ठीक है, क्योंकि like you know they have usually seen very few folks are getting a job and like you know earning. And but I have been quite lucky that like you know I am getting so much freedom as well. So like at home like you know with relatives as well, that's the thing ki like you know they used to say to me ki you should visit our home frequently, आओ बैठो. एंड क्या बोलते हैं कि गाइड लाइक यू नो जो घर में और लोग हैं, दे आर इन से लाइक यू नो स्कूल्स नाउ कि व्हाट दे मे डू. एंड लाइक यू नो दीज ये वाली चीजें हैं. एंड आई जस्ट मेक श्योर कि यार कि जहाँ से भी इफ आई विल गेट अ कॉल टू गाइड ऑन एनी लाइक यू नो कि व्हाट दे कैन डू future में, I do the same. And but I hardly go to relatives place as I mostly get bored, क्योंकि like you know वहां पर जो बातें बातें रहती है, then I mostly get bored. Then I say to them या कोई help का जरूरत हो, कुछ जानना हो, तो then feel free to give a call. आपको पता है मतलब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ. मैंने मेरे मम्मी को बताया कि इस संडे को एक पॉडकास्ट है. सो एक विकास सर है जो एज अ स्पीकर आने वाले हैं. मम्मी ने पूछा कि वो कौन है. वो आई सेड कि वो एक एंटरप्रेन्योर है. वो एक टेक कंपनी चलाते हैं. मम्मी ने पूछा कि वो क्या पढ़े हैं. तो मैंने ये नहीं बताया कि कि आप कि आप आई 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 आईआईटी से हो, क्योंकि मुझको पता था कि अगर मैं बताता तो मुझको भी ताने सुनने मिलते थे. सो दैट्स वाई मैंने Yeah. आपको पूछा था कि आपको सोसाइटी से वो पूरा अटेंशन मिलता होगा आज भी. Yeah, that's there. That's there. वैसे मतलब that's a harsh or bad reality कि मतलब बट जो है मतलब सोसाइटी में वो है. यस यस. Yeah, it is. तो हाँ, तो आपकी लाइफ आईआईटी रुड़की में कैसे थी. लाइक क्या चेंजेस आए एंड आपको किस टाइप का एनवायरनमेंट मिला आईआईटी में. ओके यार, आईआईटी जाने के बाद ना मतलब मेरे में तो एक्चुअली बहुत चेंज हुआ था, काफ़ी चेंज. और मैंने काफ़ी फेलियर्स देखे. एंड मेरे वैसे भी फेजेस थे जहाँ पर आई वाज रियली वेरी लो. मतलब एक बार तो ऐसा लो था मैं, मतलब आई यूज्ड टू लिव ऑन 7th floor. And I just felt like to jump from there.
एंड Oh. तो वैसे लो फेजेस भी थे. आई हैव सीन वेरी लो फेजेस, वेरी वेरी हाई एज वेल. हाई मीन्स कुछ एक बहुत हार्ड गोल है, मैंने साल भर के लिए लाइक खूब मेहनत किया, फेलियर्स के साथ साल भर के बाद वो आया, एंड लाइक वाह यार मजा आ गया अब तो. Mm. तो देन सीन all the things like good life. Then if I start from starting from first year, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था, अम, तो आई वॉज मोर लाइक कि उन 2 साल वाले जोन से गए थे जिन 2 साल में आई वॉज लाइक स्टडिंग स्टडिंग ओनली. तो Mm. एक और स्कूल से ही ना आई हैड अ लव टुवर्ड्स स्पोर्ट्स ऑल्सो. Mm. एंड तो देन एक तो ये दो चीजें था, और एक एक मेरे को वहां पे यूं 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 था कि यार कि सो फार माय लाइफ हैड बीन लाइक दिस कि whenever I thought कि I will have to do it, then I was getting like almost crazy to get it. I'm like I will have to do it. तो वहां पर वैसा था कि यार जो भी लोग थे ना, they were kind of smartest folks of their school. And Mm. some was from a really good school as well. And I was from a very small state board school, and Mm. जिसने ज्यादा वर्ल्ड नहीं देखा था, जिसने सिर्फ 2 साल हार्डवर्क किया था, एंड उन 2 साल के बेस पर आई वेंट देयर. तो देन वहां पर जाने के बाद व्हेन यू सी folks who are smarter and who are doing lot more thing, who are good at studies, who are uh, who are leading various outside programs as well. Mm. And so and then they were doing really well. They were meeting seniors and doing कुछ नया नया चीजें with seniors as well. And तो वहां पर मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था, तो मेरा वैसे था कि आई हैड अ फोबिया ऑफ स्टैमरिंग अ बिट, जो कि शुरू के few weeks के बाद बन गया था. First Mm. few weeks I was very much motivated. I was like, I will have to do this that. मैं sports में जा रहा था, I was doing that. And then धीरे धीरे वहां पर ऐसा था कि there were lot of societies uh, related to few were related to music, dance, and so on. Mm. Few were related to if anyone wants to do some social work, and Mm. few were related to if anyone want to do something related to business. And Mm. I wanted to join any society. तो मैंने, लेकिन वहां पर वैसा रहता है कि दे सिलेक्ट फ्यू पीपल फ्रॉम फर्स्ट ईयर. एंड तो मान लो या मान लो 100 लोग want to join one, then they only choose maybe 8 या 9. Mm. एंड देन वहां भी काफी ज्यादा फाइट है. then I wanted to join, but मैं all I went to join almost 9 10 societies, and I failed in all. or Okay. or then I was saying to myself, yeah, I was not able to join due to my stammering, क्योंकि बाकी लोग एकदम जाने के बाद बड़ा ही स्मार्टली बोलते हैं और मेरी तो थोड़ी सी फटी रहती है. एंड तो देन आई वाज नॉट एबल टू जॉइन इट. एंड वो कहीं ना कहीं माइंड में था, मतलब कि कि यार ये तो कि एक फेलियर हुआ है. एंड आई डिडंट वांट टू limit myself to study only. मुझे Mm. there are multiple things that I want to do. And फिर धीरे धीरे I have realized कि I am not so much keen in my core branch as well. So my branch over there was civil. And so What? You were in you were in civil branch.
हाँ, या Oh, great. तो देन धीरे धीरे आई हैव रियलाइज कि आई एम नॉट सो मच कीन इन माय कोर ब्रांच, लाइक यू नो, मतलब सो मच कीन मैं वैसा बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा फीलिंग नहीं था कि यार आई वांट टू डू research, want to do, say, like, you know, going for higher studies in the same branch, या तो कोई कुछ वैसा keenness हो. As I Mhm. was more कि वहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं, तो I was more like कि काफी चीजों में रहना है, and I want to do like multiple things there. तो फिर धीरे धीरे ऐसे 2 साल हुए, तो पहले दो साल में मैंने कुछ चीजें साइड में शुरू किया, जैसे वन थिंग, मैंने एक अपना वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया था, एंड Mhm. प्लान था कि आई लॉन्च इट एंड सो ऑन सो फोर्थ. आई बिल्ट समहाउ एंड थोड़ा सा लॉन्च किया, बट आई फेल्ड इन दैट, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया उसको. एंड देन एक एक मैंने ये वाला गोल लिया था कि देयर वाज अ नियर बाय विलेज, एंड उस विलेज में देयर वन रिवर जिसमें सिर्फ मॉनसून में वाटर रहता था, एंड फिर ज्यादातर साल उस गांव में वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम था. आई वाज लाइक आई विल हैव टू डू कोई वर्क इसके लिए, मे बी टू मेक लाइक स्मॉल डैम, ताकि दे कैन गेट वाटर. तो वो वाला काम स्टार्ट किया, प्लान, आई मेड सम प्लान स्टार्ट किया, बट आई फेल्ड वहां भी, लाइक Mhm. फेल्ड मीन्स जो जो गोल था कि वी वर नॉट एबल टू मीट दैट. तो 2 साल वैसे ही गए, एंड 2 साल के बाद व्हेन आई वाज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू स्टैम्बरिंग, से इफ वी आर ग्रुप ऑफ फोक्स और किसी चीज के ऊपर बातें हो रही हैं, एंड आई वांटेड टू स्पीक, एंड बट आई हैड अ फियर व्हेन आई स्पीक आई विल स्टैमर. एंड तो मैंने बहुत बार तो खुद को रोका है, मत बोल मत बोल मत बोल, एंड मान लो फिर मैंने बोल दिया, एंड देन उस बोलने में आई stammered, then I used to feel very bad. यार फेल हो गया, फिर मैं हकला गया, and so on and so forth. And then I used to go to my room, beat the walls कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे ठीक करना है, मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है, and but I used to feel really bad. तो फिर मैंने तब नेट पर सर्च किया, and then I found about the Indian Stammering Association, and then I had a call with Dr. Uh, Sachin, and then I went to meet him in Dehradun, as Roorkee se Dehradun is quite nearby. And then I went to meet him there, and वहाँ पर there was a meeting. तो उन्होंने बोला कि you can go to Sir स्टेज, एंड जिस चीज पर स्पीच देना है स्पीच दो, एंड जस्ट स्पैमर जानबूझ के. एंड देन आई Mhm. वाज सेइंग कि माय ना ना नेम इज वी वी विकास रंगा, एंड आई एम लाइक कि आई एम फीलिंग नॉट रिलैक्स, यार अभी तो बोलने में मजा आ रहा है, ये क्या हो गया, लाइक सो फार आई वाज सो टाइट कि लाइक जब बोल रहा था तो वैसे ही, मतलब टाइटनेस के साथ ऐसे कुछ भी बोल देना है टाइप से. एंड देन आई एम लाइक यार रिलैक्स लग रहा है, ये हो क्या गया है. एंड देन ही हैज सेड कि यार जस्ट मान लो यू स्टैमर, एंड डू योर वर्क दैट यू वांट टू डू, दैट्स इट. एंड आई एम लाइक ओ, that's a new thing. I didn't know it. I was so far chasing fluency so much. I was having fluency goal. When I was not fluent, I was feeling so bad. And like वही वाला phase था जो मैं बोल रहा था कि जिसमें I was having this thought to jump from my room, जो कि uh, 7th floor पे था. And then I was having all sorts of negative thoughts. And then I'm like, it's so easy. Just one more you stammer, then why do you have to, like just be fluent to achieve any goal? Then I went back to Roorkee, and maybe वो वाला दिन था जिससे I got changed, like
a lot. Then I went to Roorkee. Roorkee में जाने के बाद I have started my own society, and so we were working in a nearby village, and तो फिर I built my team, जिस टीम का साइज नियरली 60 से ज्यादा हुआ था जब मैंने जब मेरा बीटेक पूरा हुआ था. And then like we had goals. We used to go to village work, and I used to give like speeches like Stammering, but like Wow, gathering team, interesting. building team. But that was a really good period, and everyone was knowing me as a like he's the guy who is really keen to bring some social change, and who can found like where he is really keen, and what he wants to solve. And तो फिर ये था. Then in my fourth year मैंने एक नया goal लिया, that I got a chance to plan and host a social festival. So like as we have seen, like we have not seen anywhere a social festival. तो और मेरे अंदर उतना स्किल नहीं था to plan and host a social fest where I had to raise sponsorship. I had to build a team, plan whole thing, and go to dean के पास जाना, पहले dean से हाँ लेना, and like doing all those things. एंड वो मैंने फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया था, और उसको आई थिंक उसको आ, उसमें मेरे चले गए थे करीब 9 months टू डू इट. आई हैड फेल्ड अ लॉट इन दैट, एंड मतलब each day there was that thing कि you have to quit, because due to that I left my placement also. मतलब कि मैंने कुछ प्लेसमेंट का प्रैप नहीं किया था, एंड बाद में ड्यूरिंग प्लेसमेंट में एक दो में बैठा, बट देन आई हैव रियलाइज कि यार मैंने क्या बोलते हैं पूरा फोर्थ ईयर आई वाज जस्ट वर्किंग हार्ड फॉर दिस सोशल फेस्ट, तो इट विल नॉट मेक सेंस टू गो फॉर प्लेसमेंट. तो फोर्थ ईयर में मार्च में जाकर के होस्ट किया था, प्लान किया था फिर, एंड दैट वाज रियली वंडरफुल. देन फिर मैंने उसके बाद जॉब के बारे में सोचा, बट बट वो तब एक चीज माइंड माइंड में थी, यदि बीच में छोड़ दिया ना तो माइंड ऐसा बन जाएगा कि व्हेन यू हैव अ गोल, इफ यू गेट फेलियर, देन माइंड विल लर्न यार फेलियर मिला तो छोड़ देना. तो माइंड को यू नीड टू टीच लाइक दिस कि फेलियर है स्टिल कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट. यदि फेलियर 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 के बाद जब आप 100 से ज्यादा फेलियर देखेंगे, देन यू विल डू इट, देन माइंड विल लर्न यार चीजें होती हैं, चीजें हो हो जाएंगी, बट यू हैव टू कीप डूइंग इट. एंड या तो इसलिए फॉर मी रुड़की was like wonderful period जहाँ पे I had seen all sorts of phases, very low, very high, and I had made a really good like friends over there. Maybe जो वहाँ पे दोस्त थे, they are still really good friends right now, my batchmates and my juniors mainly. And तो maybe the one thing we should always get from ग्रेजुएशन दैट आई वांट टू से, जो यहाँ पर अभी यंग है, तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन डू मेक फ्रेंड्स, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल हार्डली मेक फ्रेंड, क्योंकि वो फिर दोस्त थोड़े नेम सेक वाले दोस्त रहने वाले हैं. बट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन यू विल मेक अ रियली गुड फ्रेंड्स, एंड वो फ्रेंड वैसे हैं कि जिनको आज भी यू कैन कॉल एंड मीट, एंड लाइक यू कैन शेयर कोई भी चीज है, यदि नीड हो तो मांगो, बट यू विल गेट रियली गुड वाइब. वो एक ऐसा फीलिंग है व्हेन यू बी विद देम, क्योंकि वो जो ग्रेजुएशन में लाइक द वे यू हैव लिव्ड with them. So that's why I had made a really good friends over there as well. यू यू नो विकास सर, मैं इस पे दो तीन चीजें बोलना चाहता हूँ.
आपने जो बोला कि यू एंटर्ड इनटू बीटेक फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड एंड देन वो आपका बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग टू बीइंग अ को-फाउंडर ऑफ अ टेक कंपनी, वो मुझको जानना है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड बिफोर दैट मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ ये मैं सवाल स्टार्टिंग से पूछना चाहता था कि अगर आपको एक वरदान मिलता है या फिर यू यू नो एनी दैट एनी काइंड ऑफ कि आपको अगर कोई सुपर पावर चाहिए तो आप कौन सी सुपर पावर चूज करोगे? So that will be कि whatever be situation, हम्म। my mind is always having a peace and joy. हाँ, नाइस। नाइस। एंड आपने जैसे बोला कि ग्रेजुएशन के वक्त मेक फ्रेंड्स, राइट? तो so even I was able to connect to it because हाँ, मेरे ग्रेजुएशन में ज़्यादा फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं थे, बट मैंने एक दोस्त मतलब दो तीन दोस्त ऐसे बनाए हैं एंड उसमें से एक दोस्त तो एक मतलब काफ़ी खास है कि जिसको भले मैं रात के 4 बजे भी फ़ोन करूँ तो वो मेरी बात सुनेगा। तो Oh, दैट that's तो nice. दैट तो वो एक चीज़ बहुत मैं कनेक्ट कर पाया मैं। एंड एक और चीज लगी कि मतलब इतने फेलियर्स के बाद लाइक व्हाट केप्ट यू स्टिल मोटिवेटेड, वो मैं वाकई में जानना चाहता हूँ। Uh, यार मे बी मुझे जो लगता है ना कि उस चीज में एक बड़ा रोल है कि एक चीज का जिसका बड़ा रोल है कि हाउ आर यू नेचुरली बिल्ट हम्म। कि लाइक दो दो चीजें हैं दैट दैट आई फील कि एक चीज तो ये है कि if you get to know the voice that you are getting within yourself, हम्म। मतलब वो चीजें हम ज्यादातर नहीं देखते हैं कि यार माइंड में झांकना एंड हम्म। लाइक जस्ट गेटिंग दैट वॉइस कि यार माइंड क्या बोल रहा है। हम्म। और एक दूसरा चीज ये है कि बाहर के वर्ल्ड को देखना कि जैसा मैं एक चीज बताऊं कि बाहर का वर्ल्ड ज्यादातर ऐसे बोलता है कि यार कोई गवर्नमेंट एग्जाम में जाओ जो कि हार्ड वाला है एंड वहां के बाद लाइफ सही है। हम्म। तो ये जो है ना, ये यदि जो चीजें बाहर के वर्ल्ड ने बोली है देन यू विल बी गोइंग फॉर दैट। मे बी देन यू विल नॉट वर्क दैट हार्ड, you will just work for a while, then you will just leave it. But if you just see and observe your own mind, what do you really want to do? हम्म। And when that will come from self, like when that will come from self, तो फिर ये है कि यार तब तब एक फील है, तब यू जस्ट फील लाइक डूइंग इट। तो हम्म। मे बी इन माय व्यू कि यार ये चीज बहुत जरूरी है कि हम दिन में ना कुछ टाइम बैठे विद आवर सेल्स and see it here, what do I really want to do, what I am good at, हम्म। and what give me joy. That can be anything यार। and once we get it know कि यार ये इस काम में like मजा है, ये काम I want to do it, तो फिर I don't know, फिर failure से ऐसा रहता है ठीक है यार, मतलब if we have a food to eat, we have a roof, that's fine, that's life। यार ठीक है यार, करते रहो फिर। तो then लेकिन वो वैसे ही फिर वो फेलियर में भी joy है। तो मे हम्म। बी इन माय व्यू व्हेन वी स्टार्ट एनीथिंग नो, तब एक एक चीज पूछना जरूरी है कि
do I really want to do it? Do I really feel like doing it? Do I really love it? या फिर हमने किसी ने बाहर से बोला हुआ है, या फिर हमारे घर वालों ने बहुत सालों से वो चीज बोली है कि यार ये तेरे लिए सही है, ये तेरे लिए सही है, ये तेरे लिए सही है। तो वो एक माइंड में फीड है कि वी फील है कि ये मेरे लिए सही है। बट लाइक वो चीजें जानना बहुत जरूरी है। when we find that thing कि यार I really want to do it, यदि मेरे को और लोग बोलेंगे ना कि जैसे तो मेरे घर वाले मेरे को अभी भी बोलते हैं कि हमने तेरे को 100 बार बोल लिया है कि एक अच्छी सरकारी नौकरी रेली होती तो आज लाइक बंगलो होता, एक गाड़ी मिलती, और अभी क्या, अभी अभी क्या, यू आर जस्ट फाइटिंग। तो अभी तक तो 9-10 साल तेरे को नौकरी में हो गए हैं, या फिर तूने जो काम स्टार्ट किया उसमें हो गए हैं। तो 9-10 साल में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता अभी तक। and they are still saying to me that, and but like but like they say it not so frequently, very rarely, but they do say it। एंड बट आई फील इट इन अ वे कि यार कि यदि जो काम आपने स्टार्ट किया है, दैट यू हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम योर हार्ट, तो फिर फेलियर्स विल नॉट स्टॉप। वाओ, ग्रेट। दैट इज मतलब आपने जो भी बोला ना, दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस जो मैंने आज तक सुना है। बिकॉज किधर ना किधर पीपल लाइक मी, लाइक पीपल ऑफ सेम एज ग्रुप से, लाइक 25 to 30, दे आर वेरी कंफ्यूज कि यू नो किस डायरेक्शन में जाए। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने जो आंसर बताया उनसे एक डायरेक्शन पक्का मिलेगा। बिकॉज ओके, सो Yeah, so like just want to share श्योर। one more line जो मैंने लास्ट में बोला था। तो I didn't mean to say कि गवर्नमेंट जॉब में जाना नहीं सही है। आई जस्ट मेंट टू से इफ यू वांट टू गो इन गवर्नमेंट जॉब आल्सो, तो भी अपना वाई ढूंढो। वाई डू आई हाँ। वांट टू गो। इफ यू लाइक वाई में फिर आपको मिल जाएगा कि वो जॉब क्या रहने वाली है, वर्क क्या रहने वाला है, डू यू रियली लाइक इट। बिकॉज आई हैव फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने यूपीएससी के बाद भी नौकरी छोड़ दिया है। दे आर लाइक हम्म। यार यूपीएससी किया, नौकरी ज्वाइन किया, मतलब फील नहीं आया, दैट हम्म। मतलब छोड़ दिया उसके बाद। तो फिर मे बी वो वाई ढूंढना जरूरी है। इफ यू रियली फील लाइक यार आई कैन ब्रिंग दैट चेंज इन दैट, मेरे को उस चीज में फील है, तो देन गो फॉर दैट। गॉट इट। या मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जिस काम में मन लगे या जिसमें खुशी मिले, तो उ- उ- उसमें जाना चाहिए। तो हाँ, तो विकास सर, आपके ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब एक टेक कंपनी में किया, या एक सिविल फील्ड में ही जॉब ढूंढा? यार मेरा जॉब वैसे था कि इन माय ब्रांच सिविल there's one sub branch called geospatial। तो geospatial means when we build map, जैसा कि आपने गूगल मैप्स जो है, मतलब हम्म। गूगल मैप्स इज फॉर जो हम नॉर्मल यूजर्स हैं, और लेकिन मैप का बहुत ज्यादा यूज रहता है विद बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। तो मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो गोवा में था, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट अ चांस टू स्पेंड लाइक मेरे 2 साल विद हरीश एंड ज्ञानेश ऑल्सो। सो लाइक देन उन 2 साल में हरीश से आई लर्न लॉट। एंड तो फिर वहां पर जो ये था कि
कि we were building map data for government and businesses उस वाली जॉब में. तो when I was working there, तो map field में, तो उसमें map data था. तो map data पे I have seen it कि when you use data science, then you can do like, you can add lot more value. तो फिर मैंने डेटा साइंस सीखना स्टार्ट किया. एंड तो देन आई गॉट रियली कीन इन दैट फील्ड. एंड आई एम लाइक यार इसमें तो काफी अच्छा फील है, लाइक एंड तो फिर मैंने साल भर जॉब किया. साल के बाद डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सीखना स्टार्ट किया. एंड फिर ऐसा लग रहा था यार, फिर जब वो सीखा, then I was so much keen in that field, and I was like now I have to jump into that only. तो मैं जस्ट बताऊं तो फिर ये वाला था कि गोवा में जब ये जॉब था, एंड से गोवा में जाने के बाद आई was more social as well, as Goa being a place जहाँ पे you can get a lot social also. And during BTech I was working hard. एंड तो फिर ये सीन था. फिर गोवा में जाने के बाद आई ज्वाइन पोस्ट मास्टर्स एज वेल. एंड और फिर वहाँ पर जब मैंने वो ज्वाइन किया, देन आई हैव रियलाइज कि आई लव टू स्पीक ऑन स्टेज. एंड देन आई हैव गॉट माई न्यू साइड ओवर देयर. आई एम लाइक स्टेज पे जाने के बाद आई जस्ट फील गुड, आई जस्ट लव speaking. And so that phase was really good as such. And फिर मैं गोवा में 2 साल रहा था. I was there from till 2015. And फिर गोवा के बाद I moved to Delhi. And दिल्ली में मैंने एक नया जॉब लिया था. एंड वहाँ पर आई वर्क देयर करीब 1.5 साल. And तो मतलब that was in the same field, that was in the field of geospatial only, but that was more towards data science and machine learning. And तो फिर like ये वाला चेंज वैसे रहा था कि मैं जैसे अपना कोर ब्रांच मैंने छोड़ा, तो that had been the journey towards that. एंड आपने कौन से साल में डेटा साइंस मतलब एक्चुअली सीखना स्टार्ट किया? लाइक ये जैसे आपने बोला कि यू फाइंड योर पैशन इन डेटा साइंस while working with while you were at Goa. Yeah, I started to learn it. I think so towards starting of 2015. Oh, wow. एंड जैसे आपने बताया कि आपने ह, हरीश जी से काफी कुछ सीखा. हरीश जी गपशप के फर्स्ट सबसे पहले स्पीकर थे. Yeah. Yeah, I know that. Yeah. But yeah, like with Harish, I feel one thing, like with Harish, I can share very deeply. Like we usually have a call very rarely, but हाँ. when we have a call, we do long call. And I think with him, I just share very deeply. And we have a very few folks in life with whom we can share deeply. Yeah, right. Right. um okay, so आप so अभी then मैंने आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी देखा था कि you were a co-founder of document.ai. So उ- उस
उसके रिगार्डिंग पूछना था कि व्हेन डिड यू रियलाइज कि अभी टाइम आ गया है कि खुद का कुछ चालू करे? तो वो कब था वो टाइम? यार वो वाला माइंड में जो था एक कीड़ा टू स्टार्ट माय ओन, दैट वाज देयर समहाउ इन रुड़की डेज। हम्म। एंड बट तब थोड़ा वैसा सीन था यार, एक नौकरी लेना है थोड़ा, आई नीड टू अर्न समथिंग एंड देन आई विल गो फॉर दैट। एंड व्हेन आई वाज वर्किंग इन Delhi, and I was working at Map My India, and तो तब आई थिंक सो ये बात होगी 2016 के लास्ट की। तब ऐसा माइंड में आया। तब थोड़ा जॉब में भी वैसा सीन हुआ कि जॉब के जब वो वाली जॉब में पहला साल भर आई वॉज लाइक loving the work that I was doing, and फिर एक वो फेज वैसा था कि देन आई थॉट कि यार दिस वाज अ थॉट फ्रॉम Roorkee days that I wanted to do my own, and now I just feel like to do. Then I just felt it like there is मतलब you have to do it, या तो you can do it now, या तो you can do it later. If you are really keen to do it, then just मतलब start it. And फिर ये था कि जॉब के साथ साथ ना हमने कुछ स्टार्ट किया वैसे सोचना, मेनली तो सोचना स्टार्ट किया कि व्हाट वी कैन डू इट। और जो दोस्त लोग थे, दोस्तों से पूछना स्टार्ट किया, हे वी आर प्लानिंग दिस, इफ यू वांट टू जॉइन इट। तो वैसे वैसे टीम बिल्ड होना, तो वैसे वैसे स्टार्ट वो किया था। एंड तो 2016 के लास्ट में स्टार्ट किया था। एंड देन फिर फाइनली वी हैव स्टार्टेड इन 17 फैब, जब जब हमने सीड डाल दिया था अपना कि भाई अब तो जॉब छोड़ रहे हैं, तो फैब में हमने फिर जॉब छोड़ दिया था। तो जॉब 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 छोड़ने पे भी एक स्टोरी सही है कि जब मैं जॉब छोड़ रहा था, तो मैंने अपने जॉब पर बात किया कि यार आई वांट टू लीव द जॉब एज आई वांट टू डू माय ओन वेंचर। And then they're like, then why do you want to leave the job? You can do the job as well, you can start your own, half day you can do the job, half day you can work on your venture. We can give you same salary that you have, and we can give the seed fund in your venture as well. I'm like, seems to be a good thing to have it, you are having the best of both the worlds. And फिर हमने आपस में बात किया, देन व्हेन रियलाइज किया स्टार्टअप करना तो फुल टाइम करना है यार, ऐसे मजा नहीं है कि जाएंगे जाएंगे तो फुल टाइम जाएंगे, एज यू विल स्टार्ट योर ओन, देन फेलियर का स्कोप बहुत रहता है, यू कैन फेल, मतलब व्हेन यू स्टार्ट योर ओन, तो एक वैसा चीज है कि फेल तो होना ही है। यदि स्टार्टअप बन जाएगा, दैट्स अ वंस इन अ वाइल्ड केस, नहीं फेल तो होना ही हो। तो एज मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स फेल व्हेन द फोक स्टार्ट एट अ वेरी यंग एज, क्योंकि जब जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक आई वाज 25 26 काइंड ऑफ मे बी। एंड तो फिर पता नहीं, फिर मैंने वहां पे गया, बोला कि नहीं यार फुल टाइम जाना है, मतलब दैट्स फाइन, मतलब if you want to give the seed fund, that's fine। तब बहुत ज्यादा जोश था। आई एम लाइक कि अभी मार्केट में जाएंगे, अभी VCs को पिच करेंगे, अभी देखना फंडिंग की तो लाइन लगने वाली है अभी, क्या ये इनका पैसा तो क्या ही है, अभी जाएंगे मतलब मार्केट में। एंड फिर क्या था, फिर स्टार्ट किया, फिर वहां से छोड़ दिया, वहां से छोड़ा, फिर स्टार्ट किया। वी हैड सम सेविंग्स ऑफ लाइक for 6 months maybe, not more than that। एंड फिर वहां से स्टार्ट किया। और फिर ये था कि we were building some B2B web app for
but like I'll just say it in a like a much simpler language. तो हम businesses को क्या जरूरत है यूजिंग मशीन लर्निंग, हमने वो देखना चालू किया एंड सोचा कि यार क्या एक वेब ऐप बनाया जाए फिर। तो ऐसे ही हमने स्टार्ट किया, काफी सारी डेमो वेब एप्स बनाए, डेमो दिया, फिर धीरे धीरे रियलाइज किया कि वी हैड बर्न्ड ऑल आवर सेविंग्स, अभी कुछ लाइक पैसा नहीं है। एंड और फिर लाइक वी हैड अ फ्यू फोक्स एज वेल जो हमने हायर किए थे, वी वर नॉट हैविंग money to give like salary as well, we were not having money to pay the rents and like food के लिए पैसा नहीं था। तो वो 6-7 महीने तक जो वो जोश था ना कि लाइक मार्केट में जाएंगे फंड रेज कर रहे हैं, वो सारा सारा मेरा धरा का धरा रह गया फिर। एंड so those were a good failure moments kind of, and we were saying at home कि सब सही है, कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो वो लोग बोलते जाओ अपने जॉब पे जाओ। नौकरी पे वापस जाओ। एंड बहुत बहुत जोश मतलब दिखा दिया अभी, नौकरी पे वापस जाओ। एंड तो फिर देन वी थॉट कि अब देखते हैं कि हमारा लॉयल फ्रेंड कौन है। तो जो लॉयल होगा वो हमें लाइक पैसे देगा, अभी जो लॉयल नहीं होगा पैसे नहीं देगा। तो तो फिर हमने अपने नौकरी वाले दोस्तों से लोन लेना स्टार्ट किया उसके बाद। एंड हम कि यार अभी जरूरत है, लोन लेना है, एंड जब होंगे पैसे पैसे देंगे वापस। एंड तो ठीक है, तो वैसे वैसे लिए मनी लिया, तो उससे नेक्स्ट 4 months तक आगे गाड़ी गई। एंड फिर 4 months के बाद वी हैड रेज अ सीड फंड ऑफ अराउंड लाइक 50 lakhs। एंड तब तब फिर क्या था कि तब फिर हमने सोचा कि यार नाउ वी हैव 1 साल का रनवे टू बिल्ड प्रोडक्ट, टू लाइक स्केल इट अप एंड टू बिल्ड अ वेंचर फ्रॉम हियर। तो फिर उससे एक थोड़ा सा सही सा टीम बनाया, लाइक दैट वाज अ डिसेंट प्री सीड मनी तब, जिससे यू कैन लाइक मतलब स्टार्ट द वर्क। एंड जब हमने स्टार्ट किया था, हमने तो बिना किसी मनी के स्टार्ट किया था, जो भी हमने सेव किया हुआ था वो थोड़ा डाल दिया और उससे उससे लाइक स्टार्ट किया था। बट फिर ये था यार, साल भर के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, एंड आई स्टिल फील रियली प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि विद सच अ शॉर्ट फंड we had built a really good product as such, and as we were all folks जो कि product building focus थे, तो हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया सेल्स पे और मतलब मार्केटिंग पे। एंड that's how we were lacking, like we were lacking in finding the right problem statement in the right market। एंड जो हमने प्रोडक्ट बिल्ड किया था दैट वाज मोर सूटेड फॉर यूएस, नॉट यहाँ पर, एज वी रियलाइज्ड इट क्वाइट लेट। तो फिर साल भर के लिए वो बनाया, सम सेल किया, फिर साल के बाद वी हैव रियलाइज्ड इट कि यार वो वाला फंड भी फिर नियरली जीरो तक पहुंच गया था। एंड इन द मीन वाइल वी वर डूइंग सम odd work as well from like that to was giving some workshop to someone जिससे थोड़ा सा money आना start हो, and then we can like float with that। and तो वैसी वैसी वो चीज़ें स्टार्ट किया था। एंड तो वो वेंचर हमने 2 साल रन किया। 2 साल के बाद वी हैव रियलाइज कि नाउ वी आर very low in finances, we are in debt as well। एंड क्योंकि हमने कुछ मनी दोस्तों से भी बोरो किया था, लाइक मतलब फिर से। एंड तो मे बी दैट्स फाइन यार, नहीं हुआ तो नहीं नहीं हुआ। दैट वाज रियली हार्ड कॉल टू लाइक स्टॉप एनीथिंग। एंड तो फिर तब ये कॉल लिया कि इस चीज़ को स्टॉप किया जाए।
and tab we had a chance to sell our software. We were getting a good deal of nearly 1 CR, and to sell that one, but वो हुआ नहीं in the end, as they wanted us to join their team with some lock-in period, and we thought कि फिर मतलब we were not feeling so much to join there and be logged next 2 साल के लिए. So that's why didn't join, and we were in a thought कि we will see कि if we had a chance to sell this tool बाद में, then we can do the same. But yeah, so that had been journey 2 साल का. Okay, so pretty intense battle, right? वो दो साल. Yeah. एक मतलब मैं कुछ एंटरप्रेन्योरशिप पे सवाल पूछना चाहता हूँ. Yeah. आजकल मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मतलब आई डोंट नो बिकॉज ऑफ शार्क टैंक्स एंड ऑल, यूट्यूब पे, नॉट ओनली यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, everyone is so much fascinated about entrepreneurship. And social media pe it is like a shining thing कि it will give you power, it will give you fame. बट जो entrepreneurship का पीछे का स्ट्रगल है वो सिर्फ मतलब आपके जैसे और हरीश जी जैसे entrepreneurs ही जानते हैं. So like तो मतलब उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो आप? यार मेरा ना यहाँ भी फिलोसॉफी सेम ही है कि whenever you want to start कोई भी चीजें, if we have this thing, why do we want to start it, वो बहुत जरूरी है. यदि why डीपर है ना, तो you will go a long way. एंड वाई डीपर नहीं है तो फिर बहुत दूर तक जाना हार्ड है. यदि वाई डीपर नहीं है देन यू विल फील बैड. तो ये वाली चीजें रहने वाली है. तो मे बी जैसे आजकल द वे आई एम रियलाइजिंग कि द वे इट्स हैपनिंग कि स्टार्ट योर ओन. यार मतलब स्टार्ट योर ओन में ना मुझे लगता है कि दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, दैट आई हैव बीन लैकिंग एज वेल, जो आई हैव लर्नड इट, एंड नाउ मेरे माइंड में वो काफी की है, और मैं सोच रहा हूँ कि आगे वाली जर्नी जो रहने वाली है वहां पर उस चीज पर ध्यान दिया जाए कि whenever we want to start anything, इट हैज दो चीजें जरूरी है. एक तो ऐसा देखना आ, कि what value that you want to add वर्ल्ड में with the thing that you are building. कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, नाउ वी आर seeing lot of fantasy games, like fantasy मतलब sports game, and जिसमें you can build your team on like these things. So those apps are making people number. So like when we say one line with very blunt statement, so they are making world a worse place then. Like they can earn some money from people, like have good business as well, but but लास्ट में क्या है ना कि they are making world a worse place. So I feel it in a way कि anything that you want to start, तो एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि what value do you want to add world में, and दूसरा चीज ये है कि at your core what do you really want to do.
like when we will find out ki what do I really want to do, what do I really want to build, and the thing that I really want to build, when we map it to like what world needs, like उस चीज से कैसे world में value add होगा, then we should go for that. And then it's a very long journey to learn यार. फिर ये वैसा सीन है कि like if you are building a product based venture, then find it out कि what is minimum viable product that you have to build, and with that like you like launch it with a very some specific users, fine tune product over there. Once you feel like my product is really solving one small problem for these users, then you can scale it up. So then there's that, then you will plan like how I can earn money from that as well, कि बाकी products जो हैं, what do they charge, how I can charge it, and how much money do I have to burn to build it, and say so that you can earn profit as well, and at what level your profits will like will start to come, that may not come पहले दो साल में, that will come दो साल के बाद, then you might have to raise the funds जब तक you will not reach to that stage where you are earning profits also. Then these are ये काफी चीजें वैसा है कि that we have to learn, but I feel it in a way कि जो वो starting philosophy है ना, वो बहुत जरूरी है, वो वाई है. यदि वो वाला वाई वैसा है कि यार मुझे फेम चाहिए, मुझे लाइक मनी चाहिए, तो आई फील इट कि ये बहुत ही छोटा वो है, छोटा गोल है, छोटा विजन है. एंड क्योंकि होता है कि व्हेन वी रन फॉर मनी, सो जॉब में मनी अर्न होने की श्योरिटी है, बट व्हेन यू डू योर ओन वेंचर तो कोई श्योरिटी नहीं है. लाइक होने को हो जाए, नहीं होने को मतलब, लेकिन गोल ये यही है कि वेरी जंप के अंदर बहुत पैसा आने वाला है. एंड से व्हेन यू आर गेटिंग फेलियर, ये साल भर हो गया नहीं आया, 2 साल हो गया नहीं आया, 3 साल हो गया नहीं आया, देन यू फील लॉट फ्रस्ट्रेटेड, यू आर लाइक यार पैसा चाहिए था, पैसा नहीं आ रहा है. व्हेन यू हैव दिस थिंग इन माइंड, यार आई वांट टू ऐड दिस वैल्यू वर्ल्ड में, चाहे मेरा लाइफ भी पूरा जाए, आई एम फाइन. मैं लाइक मेरे पास फूड टू ईट है, मेरे पास रूफ टू मतलब स्लीप है, तो आई एम लाइक साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, फाइन, ठीक है, फेलियर आएंगे तो आएंगे. तो मे बी आई थिंक सो वो वाई जानना जरूरी है बहुत. सो देन असली entrepreneurship वही वही है जिसमें आप सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, and you are trying to make this society a better place for others, right? या Oh wow. ये मतलब ऐसा कि किसी ने ना यूट्यूब पे बताया ना सोशल मीडिया पे. so I am very glad कि आपसे ये सीखने मिल गया. So before we move towards that, what that then how you started building Ensuredit. So मैं ये जानना चाहता हूँ कि can anyone be an entrepreneur? हाँ ओके. तो पहले मैं दूसरे वाले का जवाब पहले दूं, तो यार मतलब सेम सेम लाइन जो मैंने 2 बार बोली है, मे बी दैट्स रियली कोर टू मी, दैट्स व्हाई आई एम repeating it. And it's like when you really feel like to do it, मतलब कि like it should not be like यार ये सब लोग स्टार्टअप में कूद रहे हैं तो मुझे भी कूदना चाहिए. तो like then you feel like अरे anyone can, like कोई ऐसा बोल दे कि anyone can, if anyone can do it कि मैं भी कूद जाऊंगा, I will do it also. It should not be like this. It should be like this कि यार थोड़े time when we spend with ourselves, when you find do I really want to do it, do I really like it, do I really want to do it. यदि वैसा है ना, yes यार I really want to do it, then जाओ. and when you feel like कि नहीं यार अभी I don't feel like doing it, तो जाना मतलब नहीं है सही.
And or maybe if we take one step back, तो ये सोचना जरूरी है कि what do I really want to do मेरी लाइफ में. एंड तो ये सोचना जरूरी है, एंड दैट्स अ वेरी डीपर क्वेस्ट ऑल्सो. तो जिसमें वी लाइक यू नो द मोर वी रीड, द मोर वी मीट folks, द मोर वी नो. एंड दिस माइट बी केस कि आज मैं सोच रहा हूँ कि यार आज ये वाला चीज है, आई रियली वांट टू डू, दैट्स द माय गोल. एंड 2 साल तक यू वर्क रियली हार्ड फॉर दैट. इफ दो साल के बाद वो चेंज हो जाए, दैट्स स्टिल फाइन. क्योंकि लाइक यू नो व्हेन वी सी द मोर वर्ल्ड, देन वी रियलाइज हे आई वांट टू डू दैट थिंग राइट नाउ. तो दैट्स फाइन. लेकिन आज जो भी चीज है यार दैट आई रियली वांट टू डू, तो वी शुड प्लान फॉर दैट. लाइक यू नो प्लान मीन्स कि देयर माइट बी अ केस कि आज जाना फिजिबल ना हो ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आल्सो, या सम मोर प्रॉब्लम्स एज वेल. तो लाइक एक प्लान बिल्ड किया जाएगा. लाइक यू नो इफ आई रियली वांट टू डू दैट थिंग, इफ आई रियली वांट टू अचीव अ गोल, तो एक प्लान सेट किया है, एंड देन फॉलोइंग दैट प्लान रिगरेसली डेली बेसिस पर रूटीन बनाने के बाद. Got it. Okay, so this was about कि is it for all, and दूसरा है कि about Ensuredit. तो Ensuredit जो अभी मेरा दूसरा वेंचर है, तो इसका जर्नी वैसे रहा था कि जब मैंने फर्स्ट वेंचर क्लोज किया था, तो देन इस वेंचर में जो मेरे 2 और को फाउंडर्स हैं, तो आई वॉज meeting them, and they were planning to like you know start it. And in that same phase I was planning to leaving my old venture. उसको हम छोड़ रहे थे, we were planning to wrap it up. एंड फिर ये हुआ कि हम लोगों ने साथ में बैठे बात किया, फिर सोचा, तो फिर साथ में स्टार्ट किया ये. एंड तो यार दिस वाज अ जर्नी फॉर द सेम एज जो बाकी 2 और को फाउंडर्स हैं. दे आर क्वाइट सीनियर टू मी, दे आर ऑफ एज अप्रोक्स 45 now. And so like you know they are good at fundraising and like you know sales. एंड तो जब हमने ये वेंचर स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में ही हमने इसको 1 CR से स्टार्ट किया था. एंड दैट्स द मनी दैट वी गॉट फ्रॉम लाइक यू नो फ्रेंड्स. एंड तो या वहाँ से स्टार्ट किया था ये. एंड जर्नी तो यहाँ पर व्हाट वी आर डूइंग कि यहाँ पर वी आर बिल्डिंग अ web app for businesses who are in the business of selling insurance. Okay. And they might be insurance brokers, or they might be having any other license also. Then what we are doing that we are solving the problem of insurance sales. And as we have realized कि insurance sales problem जो है, ये प्रॉब्लम वैसा है कि जिसमें एंड यूजर who is buying is not getting the right plan based on their data. And then there are lot of mis-selling as well. Then the idea is this one, like you know any business
who are doing this, we can give them a proper web app and phone app, and they can sell it via that, and everyone can see the data, and then we can solve most of the problems then. तो ये वैसे था यार, this venture we have founded it in 2019 के starting में, एंड यदि मैं लार्जर लेवल पर बताऊं तो जैसा जैसा रहा था, तो देन वी हमने नियरली 1 CR से स्टार्ट किया था, जो अपने मतलब के फ्रेंड से रेस किया था। देन अगला फंड रेज वी डिड इट इन नवंबर 2020, जिसमें वी रेज्ड अराउंड 5-6 CR, and next fundraise, then we did it in July 2022, and that was nearly 4.2 million USD, and so in a way सब कुछ मिला करके we have raised in more than 5 million USD, and right now we have a team of more than 65 folks. Wow. And so yeah, that's how building and my own life journey had been ki I have played a lot of roles in this the venture. I have played the role of leading development team to managing product to meeting client's goal and be with the clients more, and doing multiple things, and I have failed in few of my roles as well, where we have realized that now we want to have a senior leadership team who has worked कोई एक role में बहुत सालों का काम जिन्होंने किया हो, and then they can lead that like vertical well then. And so yeah, this had been a quite good journey to knowing myself, to knowing what do I really want to do, and building this venture as well. Yeah, so these are some larger चीजें जो कि हुआ है. So, so as you said that through this venture, you are solving problems of the companies who are selling insurance, and as well you are also solving problems of the uh, common folks, and you help them to select a better insurance for and which is you know go, 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 good for both the parties, and you do this with the help of previous data, and you apply your data science skills into it, right? Yeah. So now we have few folks in our team who are really good in data science, and abhi matlab I am not doing data science anymore now. So those were the days when I was doing it. I was really loving that. And but when you start your own, then you are doing a lot of odd things, odd jobs, as you are not sure what you are doing throughout the day. You are doing like multiple things. Yeah. So then now currently your area of expertise is very vast, right? Yeah, maybe we can say that, or we can say it in a way that I just feel like to solve a problem that I feel like I can solve right now, and uske base par I learn, and yeah, that's So then now talking about data science and all.
So, are you afraid of artificial intelligence? Uh, yeah, I am not afraid of artificial intelligence. Like what I am afraid more means the folks who are building it. Hmm. Why? If I'll share it with you, uh, I have given you one example of fantasy Ah, sports games. yes. तो like यदि ऐसे प्रोडक्ट्स जो है ना जो बन रहे हैं who are not doing good for society, Hmm. तो what I am afraid more कि the folks who are building it, they have to learn कि यार कि artificial intelligence should be used for the good. Like Hmm. if it will be used for bad, then yeah, then we can make a world a really worse place. And that may be a case. So like that's why I believe in this thing. We should work on our own mind. We should work on good values. And यदि जिस बंदे के पास इंटेलिजेंस ज्यादा है Hmm. बट वैल्यूज लो हैं, then they can make a world really worst place. And ये चीजें हमने so far देखा भी है. Like if you will see as as example of Hitler, Hmm. like mind was really very sharp, but he was having very low values, and he has made world a Worst place. disastrous Yes. place. Yeah. एंड मतलब ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये थोड़ा वैसा है कि एकदम दूसरे एंड का है. बट Hmm. देर आर फोक्स लाइक जिनको सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए है. एंड इफ दे आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट लाइक से व्हेन वी सी नाउ social media, Hmm. these are built for the folks to stay over there for longer time, just be there like reels or shorts, just be there for longer time. So if we will be there on the phone for very long, watching reels, watching shorts, then we are becoming not a good being. We are going down. Our mind is going down. Our we will not be able to work really well then. And rather than say if we like meditate or to work out or to read, then we will have a really joy, we will have a peace. तो but ये apps जो बन रहे हैं, these apps are being to get folks on these apps for a very long time. And and उससे they can earn profit. तो maybe what I am more afraid of, कि if the folks who are building, if we will not work on a value system of society as a whole, then we will end up building a really bad product for our short term more profit, and we can make world a really worse place. That's really uh, frightening scenario. So you think that we need to put up a lot of regulations in this new technology? Yeah, I feel so. Like दो चीजें हैं कि या तो everyone can work on their values, and जो usually मतलब practically feasible रहता नहीं Mm. है because सभी लोगों के पास greed है, सभी के पास all sorts of
वाइसिस हैं, तो फिजिबल नहीं है, then maybe we mostly have this last resort as having government regulation. यदि ये वाला काम किया तो जेल में डाल देंगे। तो यार वो नीड है उसका। मे बी इन माय व्यू वी शुड वर्क ऑन बोथ। वी शुड वर्क ऑन मोर टुवर्ड्स की ब्रिंगिंग स्पिरिचुअलिटी, लाइक कि ताकि ज्यादा लोगों तक स्पिरिचुअलिटी पहुंचे, जिससे ग्रीड लेस हो, शो लाइक सिर्फ मेरा प्रॉफिट हो, वो वाली चीजें लेस हो, लोग एज अ लार्जर सोच पाए वैसे वे में कि वर्ल्ड बेकार प्लेस बना तो वो घूम करके मेरा भी लॉस ही होने वाला है लाइक फ्यूचर में। एंड तो वो चीज पे भी ध्यान दिया जाए, प्लस एज यू आर सेइंग कि देयर हैज टू बी गवर्नमेंट रेगुलेशंस एज वेल, एज वी डोंट नो कि whether everyone can be spiritual, whether everyone can have like good values. तो अभी मतलब सभी जगह पे ये काफी बातें चल रही है। आई डोंट नो वेदर दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ और दे आर जस्ट ट्राइंग टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। सो बातें ऐसी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारी जॉब छीन लेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताओ कि पहले पहले लोग रोटी कमाने के लिए तांगा चलाते थे। फिर फिर टेक्नोलॉजी आई एंड फिर गाड़ी आ गई तो लोग टैक्सी चलाने लग गए। बट नाउ प्रॉब्लम है कि अभी सेल्फ ड्रिवन कार्स भी आ रही है जिसमें यू डोंट नीड अ ड्राइवर टू ड्राइव दोस कार्स। बट पास्ट में ऐसे भी एग्जांपल्स है कि अच्छे टेक्नोलॉजी से और बेटर जॉब्स जनरेट होना चालू हो गए। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, पहले जो इंडिया में कॉटन मिल्स थे, तो कॉटन मिल्स में अगर 100 वर्कर्स काम करते हैं तो फिर उन 100 वर्कर्स का काम एक एक स्टीम इंजन ने छीन लिया। बट बट जब स्टीम इंजन मतलब वो स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी थी। सो बिकॉज ऑफ इट वी हैड सीन अ ह्यूज बूम इन द फील्ड ऑफ लॉजिस्टिक्स। मतलब एक नए टेक्नोलॉजी ने और बेटर जॉब्स को जनरेट किया। सो डू डू सो डू यू थिंक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ये वाकई में जॉब्स जनरेट करेगा और ये जॉब छीनेगा लोगों से? यार if I मतलब I'll share my views on this in two like ways. One is this one, the way I am seeing mindset of builder. I'm saying कि mostly businesses who are building it, and तो जो mindset है, the mindset is just to earn their own like profits. Right. With that, job scarcity will be there more, and वो होने वाला है। And if you have seen the way we have grown पिछले 30 सालों में, it's like it's मतलब I'm using the word growth, मतलब I should not use the word growth, I should use the word change. So क्योंकि growth is like बहुत चीजों में we are going high, बहुतों में we are going like down as well, and तो maybe change word बोलना सही है। तो the change we have seen पिछले 30 सालों में, rise of like devices,
इंटरनेट, हम्म, डेटा। तो इन सब चीजों से जो चेंज हुआ है ना, एक तो चेंज हुआ है द वे वी वर्क, हम्म, एक जो दूसरा चेंज हुआ है जॉब नेचर, कि अर्लियर इट वाज मोर लाइक डूइंग गवर्नमेंट जॉब, गोइंग टू अ प्लेस। तो now there have been more and more jobs in like private sector. There have been jobs like where you can work from anywhere. So like these are few things I'm saying कि the change in job nature, and there have been change in our own lifestyle as well. So earlier we were more social, now we are not, and we are more with like mobile devices, and तो then ये change जो हुआ है बहुत fast हुआ, बहुत ही ज़्यादा fast, वरना we have been social being, we have been doing the same, like our job nature was nearly same बहुत सालों तक, और यदि जो भी change हुआ था ना वो बहुत सालों में हुआ था, but now you can see it's a so rapid change, and by having artificial intelligence, that change will be faster, that change will be a lot faster, जो हमने पीछे देखा है, it will be faster than that. तो यहाँ पर मुझे जो लगता है ना, मे बी आई गो बैक टू ऑन वो वाले दो चीजें जो हमने लास्ट में बात किया था। वन इज की वर्किंग ऑन giving good values to folks, and making them more spiritual, हम्म, ताकि they will focus on this thing कि यार how I can solve the problem of jobs for all, हम्म, r- rather than I will solve the problems of bringing users on an app, and make sure to play with their mind with a latest neuroscience theory to make sure that कि वो ऐप पे पूरा दिन रहे, चाहे उसका if वो बच्चा is studying तो वो अपने लाइक में मतलब कि लाइक पढ़ाई छोड़ दे बट वो वहीं पर ऐप पे, rather than making users worse, like लोग ये देखे प्रॉब्लम, like how can I solve the problem of jobs for all, how can I solve the problem of food for all? How can I solve the problem of the roof for all? तो ये जो है प्रॉब्लम, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, एंड लाइक जिनके पास एक डिसेंट वेल्थ है, एक डिसेंट वेल्थ पहुंच गया है, तो डिसेंट वेल्थ के बाद इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे, रादर देन कि यार मेरे बैंक में अभी मान लो 5 मिलियन यूएसडी पहुंच गया है, मेरे को 5 से 20 मिलियन कैसे बनाना है, 100 मिलियन कैसे बनाना है, वन बिलियन कैसे बनाना है, मैं सिर्फ उस चीज पर ध्यान दे रहा हूँ, चाहे बोले कैसे भी बनाऊं, बना रहा हूँ, देन यू विल डाई, तो डाई के बाद क्या होने वाला जो है सो है। तो यार इसलिए दैट्स व्हाई वी नीड मोर एंड मोर people who will solve real problem, and I get that thing यार, like in our nation ज्यादातर लोग जो हैं they are like fighting for daily needs, they are fighting to get a job, they are fighting to get a decent wealth ताकि they can make sure कि भाई उनको लाइफ टाइम में कुछ भी मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो for them like they should keep doing that यार, क्योंकि वो चीजें बहुत needed है, बट जिनके पास एक डिसेंट वेल्थ आ गया है ना, दैट्स फॉर देम कि यार मतलब नाउ अभी solve some good problems, and like being more spiritual, ताकि you will not be much self-centered, you will think about society then. एंड वंस अगेन, जैसा मैंने पहले भी बोला था, आप जो चीजें यहाँ सिखा रहे हो, ये यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाता, इंस्टाग्राम पे कोई नहीं सिखाता। एंड जैसे आपने बोला कि
मतलब शायद जो एप्लीकेशन है, दे वांट पीपल टू गेट distracted from the real issues. And now I and अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि ये मतलब मैं इस प्रॉब्लम को जितना समझता था, ये उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड मैं एंड हाँ एंड एक सवाल ऐसा भी है कि जैसे अभी सभी लोग बोलते हैं कि अभी इंडिया का टाइम आने वाला है, एंड जो कि मैं वाकई में चाहता हूँ कि आए। बट अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स हैं, वो सिर्फ दो ही कंट्रीज के पास है। वन इज चाइना, सेकेंड इज यूएसए। Yeah. तो फिर मतलब हाउ कैन वी deal with this, like इंडिया का फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी एरिया में कैसा रहेगा, एज पर योर एक्सपर्टीज? यार मतलब सो देखो, एक तो चीज है वही है कि जो जो लोग जिनके पास पावर है, be it in government, like who are at good roles, and be it in businesses जिनके पास money है, if they will not focus on AI research, तब तक बनने वाला नहीं है। तो और इंडिया में मैंने ऐसा देखा है सो फार कि like it there's not so much focus, like we are mostly users, we are hardly builders. So yeah, you are saying something. नो नो नो, मतलब आपने जब ये बोला कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन रिसर्चिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, लाइक मैं अभी एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ बाय राजीव मल्होत्रा। तो वो बताते हैं Yeah, कि yeah, मतलब एआई से क्या क्या चेंज होने वाला है, एंड yeah, वो भी यही बात बताते हैं कि वी नीड टू स्टार्ट investing into this yeah, technologies rather than just being a user. तो yeah, बस yeah, वो एक बात मतलब ये अभी याद है। yeah. या No, प्लीज कंटिन्यू। that's really good. Well, I have been listening to Rajiv a few days back only. So yeah, that's good. And तो yeah, जैसे ना मतलब in our nation, what we are doing mostly, we are users, we are not, like we are not focused so much on building. That means, like builders means you are uh, like investing in AI research ताकि वो 10 साल के बाद that will give some value. That's like building. हम हो क्या रहा है कि गूगल बना देगा, then we can use it. And गूगल क्या देगा कि गूगल will give us in the form of a final product, and they will charge the money for the same. And if they have built it in the, like they will build a product for businesses, they will build a product for end user, and then we will just use it then. So मतलब and then they, like नहीं तो what they may do, they may build a product using AI for businesses ताकि business can use their product to make their business. तो उसमें वो business क्या बोलेंगे कि से मान लो कोई मैं एग्जांपल दूं कि गूगल ने बना दिया है मैप्स, और मैप्स में गूगल ने मान लो बहुत सारा डेटा साइंस
डाल दिया है, बहुत सारा मशीन लर्निंग डाल दिया है। एंड तो अभी से गूगल मैप्स इज बीइंग यूज्ड बाय सम बिजनेसेस लाइक से Zomato and so forth. Then these firms can say, yeah, we are also using artificial intelligence, but at the core they are not building anything. They are just using जो गूगल ने, फेसबुक ने, अमेजोन ने बिल्ड किया है, दिया है, एंड दे विल हैव टू यूज इट इन द सेम वे जो कि वो लोग दे दे रहे हैं। इफ दे आर गिविंग इट टू मेक like you know to like you know what they are giving, if that thing is not making world a good place, still they will have to use it क्योंकि फिलहाल वही है। तो इसलिए in one line I would like to say it in this way: we have to invest a lot in AI research, and we will have to invest money in making values better, ताकि we will do research for a product that will make world a better place. सो मतलब घूम फिर के बात वही आती है कि if we will start investing in AI research, then India will be able to use it for for a better purpose, and which will and in a way which will also give good values to you to to the Indian companies, and so in that way Indian companies can help to solve this job problem as well. uh, uh, did did I summarize it in a correct way? यार to solve a job problem जो है ना, ये एक थोड़ा वैसा है कि like if India will invest in AI research, it does not mean that job problem will be solved. It Mm. it it will mean that we will we as a nation will be having rights on that research, Mm. and we can sell that research slash product of that research to the whole world, and then we can earn from that. But it might be a case that कि उस research में few lakhs लोग देना है बस, and Mm. those few lakhs will have the job. And say if that research is for that जिससे बहुत सारी jobs जाने वाली हैं, कि मान लो कुछ चीज ऐसा बिल्ड होने वाला है कि बहुत सारी जॉब जाने वाली हैं, एंड बट नो वन इज वर्किंग कि जिन लोगों का जॉब जाएगा उन लोगों को जॉब जैसे मिलेंगी। इट्स लाइक कि कुछ काम हो ही नहीं रहा है। से इफ वी विल फाइंड कि यार if the root cause is education job ka, then we should full-fledged working on that. We have to make sure कि यार let's make sure कि uh, everyone will get a skill जिससे everyone can find a job. If that skill needs to have a full schooling or having a graduation, let's make sure that everyone get it. And जिनको वो मिल नहीं रहा है तो those can get a मतलब कि skill जिसके बेस पर जॉब्स होगा। तो आई थिंक सो जॉब्स का प्रॉब्लम जो है ना, वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, and someone needs to work on that. Maybe a lot of folks need to work on that, be it at government side or business side both. Yeah. Wow, that was indeed a very pretty intense thing. Like like जैसा मैंने बोला कि आप जो चीज सिखा रहे हो वो इन सोशल मीडिया पे कोई नहीं सिखा रहा है।
Oh, intense, really intense. And can we have some qu- questions from the audience? Um, if anyone wants to ask any questions, feel free to ask. Okay. Okay, so like uh, अगर विकास सर, अगर एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनती है जिससे आप टाइम ट्रैवल कर पाओ, तो आप खुद को क्या एडवाइस दोगे आप? Uh, okay. खुद को एडवाइस तो मे बी दिस थिंग ओनली कि like work on, yeah, maybe anyone was sharing anything. Yeah. Uh, yeah, actually, Ashok wants to ask something. Even Harish ji wants to ask something. So can we Yeah, take questions from them? yeah, sure, sure, please. Yeah, it will be great. Yeah. Hello. Hello. Harish ji. Okay, is it my turn? Yeah. Yes. Yeah. Oh, okay. I the network got dropped, so I did not hear you call out my name. Okay. So hi Vikas, hi Hey, Rohit. hi, First of all, Harish. congratulations to you both for having such a wonderful session. I'm really enjoying it. And one question that came to my mind when Vikas was speaking about moral values and better use of AI, right? I just and since Vikas is into this technology AI for a long time, uh, do you have any ideas wherein organization like CISA, how can it apply AI in a good way for its goals? Any ideas on that? Hmm. Okay, it's good. Very hard question as well. And so, like one thought that came to my mind that we can look at APIs, uh, APIs of Google, Microsoft, Amazon. As I can see, these are the ones who are building it a lot. And if if those APIs can help us in our self-help group meetings, or say, like anything like that. But I do not have any example in my mind, as I have not given any thought so far. Mhm. So maybe, but that's a really, good thought. And what we can do is, we maybe we can ask everyone who is in that, hey, let's everyone finds the right APIs that may be used, and have a meeting then where we can, share all those. Right. For example, I guess Harish ji is once again having I have to answer interviews. So, like these are some repetitive questions which are there. What if we have like the first layer of inquiries? If we can
have a AI bot which can redirect the people to the right person. Like if they want to do MOOC, then okay, whom to contact. If they want to just contact their local FAGs. So something like that comes to my mind. But I think again it requires a lot of learning, training, data sets. I know it's getting too technical, but that's the thought I want. It came to my mind. Yeah, yeah. So maybe we can find some ready to use APIs slash apps as well. This may like model will not be need, needed to learn from a new data set. So we can find for this use case. Maybe we can have a meeting for that and give folks a space of a week or two to read and uske bare mein as such Yeah, yeah, that we yeah, can have. perfect. Yeah, Yes, yeah, yes. I yeah. hope we have another meeting for this someday, and we'll see what we can do for AI and use AI for the betterment of the TWS community. Great. Thank you, Vikas, for Thank you, Harish. everything. Yeah, Yeah, it bye. is great. Thanks. Thank you, Harishi. That was indeed a very good, uh, good, good question. So now we have one more question from uh, Ashok. Uh, Ashok, please unmute. Hello. Yeah, 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 yeah. Please ask. Yes. Thank you for giving me opportunity to share my views. And actually, this session is quite good. And thank you to our friends, Vikas sir and all of. Actually, his thoughts on this techniques AI is quite good, and he is thinking on the starting point that how can we uh, we can change the situation and give the jobs to our uh, give the jobs to our friends and but question is that how can we train ourselves uh, from the point of spirituality so that we can get things from this spirituality and so that we can be calm and cool and take good uh, decisions for all. So can you please guide us on the uh, spirituality point of view? Yeah. No, that's really good that you have asked this. So I feel in a way that spirituality is our own quest, and so if anyone wants to start say anything, then you can start with any one of meditation, like any ones that you would like to follow. And I don't want to give any names right now, just because
don't want to do anyone's branding as such. And so if you want to ask specifically the names, if I'll talk about myself, then I follow Vipassana, and so that's what I love doing it, because in that I have to just look within self, and that's the only practice. And but yeah, I feel it in a way कि जो भी practice है that you want to follow, just follow it, and just be logical as well, कि जो भी mind में doubts हैं मतलब पूछो वो, as there might be some practice also जिसमें जिसमें if the practice is not so logical, then doubt resolve होना जरूरी है बहुत. And then the main thing वही है कि practice daily. The main thing that matters is practice daily. It's more like कि पूरा दिन में our mind is having a lot of मतलब problem, and the mind is having so many views. When anyone says anything we feel bad, या फिर जो हमारा मन है to do anything वो काम में failure मिला, then we feel bad. So then इसलिए if we do the daily practice, then we make our mind calm, we feed into our mind the right set of values daily, and ताकि when we go फिर से to the work, to the world, then तब उस चीज में भी हम अपने values वाला life जिए. So in my view, any practice that you follow, just follow it daily, and maybe you can start with any meditation practice if you are not doing any practice so far. Or just want to say one more thing. If anyone is deep into reading, then you can start reading philosophy also, as we learn a lot of good values by reading philosophy. Okay. Thank you for that answer, sir. Yeah, and I am deep into reading, so and I have never thought of reading philosophies, but now I guess I should start. Yeah. It's elegant. It's elegant. Yeah, sir. So then coming back to the question, so what message will you like to give yourself? I think so that one only, that just work, I would say to my younger self, just keep working on your mind so that you will be at more peaceful and joyful state at most of your day, and just work on yourself to follow good values. And yeah, that's the one that I wanted to give, as I have realized it towards later in my life. And once I have realized, I have found that's the core point to be peaceful, to happy for longer time. And mostly when we focus on some goals, that will give
happiness, but for a very short time. That can be to have a bigger house, bigger car, or say like, all those things, like, those can just give happiness for a few weeks, yeah, for a bit more than that. So the real happiness when we have to get, then we have to work on within ourselves. We have to work on our mind so that our mind state will be in more peaceful and joyful state. Maybe like, in almost all phases, and the good वैल्यूज दैट वी लर्न वी जस्ट फॉलो इट, चाहे लाइफ में फेलियर हो, क्योंकि ज्यादातर वी डोंट फॉलो गुड वैल्यूज व्हेन वी गेट अ फेलियर, वी आर लाइक यहाँ तो चीट बनता है, एंड व्हेन वी स्टार्ट टू डू द चीट, देन देयर इज नॉट अ line, not a like, मतलब कि line की कहाँ पर cheat को रोकना है, then you will keep doing the cheat, and then you will become like, and say when you don't follow good values, it's very hard to be at peace. It's like कि वैल्यू सही नहीं है तो पेन लाइक होना ही होना है फिर. It is just similar to the law of karma. Yeah. And is this the same reason that why you wanted to name this podcast session as permanent happiness? Yeah, but that's the same reason, and the beauty is this कि हमारी बातें घूम के वहीं पर ही पहुंच गई है, बिना बिना वहां से स्टार्ट किए, और yeah, that's really good. You know what, sir? Thank you very much for this session, because I know कि मैं ये चीजें बार बार कह रहा हूँ, बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ. आपने जो 2 घंटे के सेशन में सिखाया about values, about how we can make this society a better place, ये सोशल मीडिया पे कोई नहीं बता रहा है. एंड जैसे आपने बोला कि शायद वो कंपनी सोशल मीडिया को ऐसे बना रहे हैं so to gain maximum profit, which is keeping people like me and many people distracted from the main goal. So thank you for that. Yeah, I just loved it, and it's always a pleasure, and you are doing such a great work. Like, you had a session with Harish and Sachin sir, and like, you are doing such a great work कि हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और one by one, like, बात किया जाए, views जाना जाए, and like, that's really good, and that's how like, we can add more value in our life being a stammerer, that like, to join at more of such platforms where we can share, we can give our views, and we can add value एक दूसरे की life में जितना भी डाल पाए. Thank you so much. So everyone, thank you for joining this session with the great Mr. Vikas Ranga. Thank you so much. Thanks, bye. Thank you, sir. Thanks, bye. Goodbye, everyone. Hope you all enjoyed this wonderful session, and I am pretty sure that all the lessons learned during this super intense 2 hour session, it will really add more value to our life. So thank you once again, and until the next Gup Shup session, हकलाओ मगर प्यार से. Bye bye.